Hello friends, welcome to CEC Gurukul Live Lectures. Dear friends, this is our another session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and today we are here for you with another interesting topic. We know that most of you have inclination towards science and most of you wish to have a career in the area of engineering. But we would like to tell you all that apart from engineering, there are areas which you have not discovered till date and you are going to discover through the session of ours where we are going to discuss on prestigious science entrance examinations in India, and by clearing those examinations you can have a successful career in the area of science as well as you can get admission in the reputed institutions in India. For this session, we have with us in our studios Mrs. Anjali Kaushik. Mrs. Kaushik is a career counselor. She is a psychologist, a parenting and a life coach, and she is a psychologist and a counselor in a reputed institution, a reputed school. So let's welcome our guest, Mrs. Anjali Kaushik, and let's try to understand, let's try to enlighten ourselves what are those science entrance examinations with the help of which we can have a successful career. So I would like to welcome our guest, Mrs. Anjali Kaushik, once again. Hello ma'am, welcome to the session, and we are always delighted to have you in our studios because through the dint of your knowledge, we always find a path, a road which we have never seen, because our students always try to find out who is the appropriate person, who is the torch bearer who can show us the hidden roads. Now, when we talk about science, the first career option appears before us is engineering, IIT, JEE. So, do you feel that the scenario has been completely changed and now we have multiple options, multiple of entrance examinations through which we can think about? So, students who are listening to us today, I would also like to share that science does not always mean engineering anymore. There are careers that are available to you beyond just engineering and beyond just being a doctor or a dentist. And if we were to ask you, or I'm sure not many people know about it, but if we were to share with you on paper, there are 2000 plus careers. So in our lecture today, I'm not sure that we can talk about all of them, but major career options available to science students. We would love to talk about it today with you, Gitika ji, and let our learners know that there is more to science than just engineering and medicine. So if I were to tell you, there are some very prestigious entrances. अगर बच्चे ने PCM लिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इंग्लिश तो उसका मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इन दैट केस these children can take up some good entrances जो national level entrances हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के recognized colleges हैं, national importance उनको दी गई है. तो कौन से हैं ऐसे entrances, आइए ज़रा आपको बताते हैं. For example, we have the Indian Institute of Science and Educational Research. It is called IISER. इसका अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. IISER की ब्रांचेस हैं पुणे में, मोहाली में, कोलकाता में, एंड सबसे ख़ास बात ये है कि इट इज़ गिविंग यू अ मल्टीपल प्रोग्राम ऑल विद ड्यूअल डिग्रीज. फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे ने एंट्रेंस क्रैक किया, BS और MS की ड्यूअल डिग्री मिलेगी उसको, and he will come out in 5 years a complete professional with an excellent package. करना क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ने JEE एडवांस्ड की तैयारी करनी है, JEE एडवांस की आप वैसे भी तैयारी कर रहे हैं, मेंस की आप कर रहे हैं, यू विल गिव द JEE एडवांस पेपर हेयर, और both things happen, or you will give the IISER aptitude test. So if you've not given the JEE advanced, you can go and give the IISER aptitude test. अब यहाँ बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि ये prestigious है, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसको कहा गया है हमारी कंट्री में. रिसर्च ओरिएंटेड ये इंस्टीट्यूट है एंड इंटायरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देयरफॉर द प्लेसमेंट्स आर ऑब्वियसली वेरी गुड. सो IISER के 7 कैंपसेस हैं. IISER is in Pune, we have it in Bhopal, we also have it in Mohali, कोलकाता, बहरमपुर. क्या ऑफर कर रहा है? एज आई सेड, 5 साल का BS MS ड्यूअल डिग्री दे रहा है. अगर आप पूछे मुझसे
क्या स्पेशलाइजेशंस बच्चा ले सकता है इस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में, तो आप बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, इसकी इतनी डिमांड है not just in India and across the world. Same ways with climate science, computer programming, humanities, and भोपाल का जो आइजर है उसमें we also have data science engineering. So इस तरह से BS/MS dual degree is available through आइजर aptitude test, या फिर आप JEE मेंस के बाद एडवांस दे रहे हैं उसका स्कोर भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. Another thing that is available here only is a 4-year program. तो अगर आप 5 years नहीं जाना चाहते, you can go up for a 4-year BS research program in data science. In economics also it's available, and this is available at IISER Bhopal, IISER Tirupati, and some at IISc IIT via your entrance test. Another thing that's available is BTech. अब बीटेक आपके पास सब जगह अवेलेबल नहीं है, इट्स ओनली अवेलेबल एट आइजर भोपाल. नाउ बीटेक इज अवेलेबल एज आई सेड इन डेटा साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस. इसके लिए आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट देना है. आपका जेई एडवांस स्कोर इज एप्लीकेबल, बट यू विल ऑल्सो हैव टू गिव द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ जब हम एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं तो आप कहेंगे व्हेन इज़ द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट रियली हैपनिंग. नाउ आपको ये बता दें दैट द ओनली चैनल नाउ ऑनवर्ड्स IISc बैंगलोर का भी और IIT मद्रास का भी और IIT गुवाहाटी का भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तीनों के तीनों आपका आइजर का ही स्कोर. सो थ्रू द आइजर स्कोर यू कैन ऑल्सो अप्रोच द IITs. नाउ पेपर पैटर्न की बात करते हैं. इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. 60 MCQs आएंगे, 15 ईच फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स. आप मुझसे कहेंगे कि मैंने बायोलॉजी अगर नहीं पढ़ा या मैथ्स नहीं पढ़ा, और आई वाज अ PCM स्टूडेंट और अ मैथ स्टूडेंट, in that case what do I do? So you have to study either of the two, and if you've studied both that's also okay. You have to have PCM/PCB. Either way you will have to give all 4 in the MCQs. चारों सब्जेक्ट का टेस्ट होगा. जो भी आपने नहीं पढ़ा है out of the 4th one, you will still have to give the test, and therefore children will have to prepare at their own end. Biology, chemistry, maths and physics 180 minutes का पेपर है, and marking scheme just like the other NTA papers, +4 for each correct, -1 for each incorrect answer. आपकी फाइनल रैंक एज पर द स्कोर आ जाती है, एंड यू आर गिवन अ ब्रांच एज पर द स्कोर एंड accordingly the center as per the score. So this is your IAT test, IISER aptitude test, a prestigious entrance exam, an exam of national importance, and you can easily expect a package of 16 to 25 lakhs per annum for starters, and that is definitely at par with our IITs. So this is nice to know that सिर्फ IIT नहीं, और भी नेशनल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ने ऐसे हमारे बच्चों के लिए खोले हुए हैं विच चिल्ड्रन नीड टू नो अबाउट, एंड दे शुड बी एबल टू टारगेट एंड टारगेट इन टाइम. बिकॉज आपने प्रेपरेशन पहले से करनी है. आप अगर सोचे कि मैं क्लास 12th में ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा, उससे नहीं होगा. The moment you enter grade 11th, you have to target these entrances. If you are also targeting for JEE Advanced, you can also simultaneously work for the IISER aptitude test. Okay. So let me also share with you, ये एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं, बच्चों को बताने की ज़रूरत है. उसी में एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस in Bangalore, and that is IISc Bangalore. अब IISc जो बैंगलोर का है, इसका प्रोग्राम है कॉल्ड BSc रिसर्च. इसका जो एडमिशन होगा, या तो JEE एडवांस का स्कोर दिखा दीजिए आप. अगर आपके पास नीट का स्कोर है तो नीट का स्कोर दिखा दीजिए.
अगर आपके पास आइजर का पेपर दिया है, उसका भी एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर है, वो दिखा दीजिए। आइदर वे आपका IISc बैंगलोर में एडमिशन हो सकता है थ्रू एनी ऑफ द स्कोर्स, JEE एडवांस स्कोर, नीट स्कोर, IAT score, any of that. So it's a top ranked research university of India, nationally ranked and prestigious university. क्या ऑफर करता है IISc? BSc research is available. BSc research में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? It's a 4-year program and you are working in a research field, preferably for example mathematics and computing. ये हमारा BTech का प्रोग्राम है, ये एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इसी तरह से आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं आगे जाके। BSc के बाद आप MSc में जा सकते हैं, BTech के बाद आप MTech में जा सकते हैं, मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग भी अवेलेबल है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट भी है, मास्टर्स इंजीनियरिंग एंड जॉइंट MTech भी अवेलेबल है। सो आप ये सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर इंटरेस्टेड। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपना इंटरेस्ट भी क्लियर होना चाहिए वंस यू जस्ट टेक अप साइंस एंड यू हैव एंटर्ड grade 11th. So the programs offered are integrated PhD, MTech, PhD regular science, engineering, interdisciplinary domains. So आप कहेंगे what is the eligibility? आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज कंपल्सरी प्लस एनी अदर सब्जेक्ट इफ यू हैव, otherwise the fourth subject is your English. So that is the main requirement and you will have to sit down for the entrance test. As I said, JEE advanced का entrance test का score यहाँ applicable है, unlike the IAT test. Same ways IAT का test आपने दिया है which is called the ISER aptitude test, वो score भी आप यहाँ दिखा सकते हैं if you are coming from the ISER and you have not gotten admission in ISER, you can take admission in IISc. And further, if you're not planning to just take a BSc research program, you can take a BTech. BTech में क्या करेंगे आप? For example, the branch that they offer at ISER is Maths and Computing. Class 12 में Maths आपके पास यहाँ mandatory चाहिए ही चाहिए and selection based on JEE है and आपको admission portal पे accordingly rank आ जाती है। तो undergraduate scope की बात कर लेते हैं। जो एवरेज प्लेसमेंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली BSc रिसर्च स्टूडेंट की 28 lakhs पर एनम की होती हैं, BTech की 22.5 तक पैकेजेस जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आप मान के चलिए 22 to 28 का पैकेज फ्रॉम टॉप कंपनीज हायर कर रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एयरटेल, टाटा, फ्लिपकार्ट, ऑल ऑफ देम। And many graduates pursue further research और आपको पता है stipend आपको साथ में मिलेगा because government wants children to go into research and children are not giving time into research and therefore this incentive of stipends to enter into academia, enter into the industry. So this is another paper that they can take up. Now let me also talk about another prestigious entrance. Now this prestigious entrance that I am now going to talk about is more into atomic research, and you know that nuclear research and atomic research is so much in demand now, and if you enter into this institute, believe me, you will earn more than your IITians. So let's talk about it because these are very lucrative careers. Children don't know about it. Let me elaborate. Without talking about other things, let me talk about the NEST paper. It's called NEST, National Educational Science Test. So Institute NISER, it's National Institute for Science and Educational Research. The premier institute is in Bhubaneswar. It offers you integrated BSc MSc program just like your ISER was giving you. This is also giving you a dual degree BSc MSc integrated 5 years. आपको देना है national entrance for the science test which is called NEST, and because atomic research careers आपके लिए खुल जाते हैं, so the exam is conducted by NISER Bhubaneswar only
and the University of Mumbai. And the Department of Mumbai is called the Department of Atomic Energy for Excellence in Basic Sciences, Mumbai. So these two organizations together conduct the National Entrance Screening Test. Now, as I said, it's a dual degree program. क्या कवर कर रहे हैं? ये दो इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं. एज आई सेड, नाइजर भुवनेश्वर एंड CEBS मुंबई मिलकर टेस्ट कर रहे हैं. अब क्या है कि ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग मिल रही है. एंड जो ये इंस्टीट्यूट में आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं and you enter the dual degree program, you start getting a stipend, a generous scholarship कहिए, and the scholarship is approximately 80,000 rupees under the Inspire, which is the government of India scheme, the DAE scheme. So बच्चों के लिए बहुत बड़ा incentive है. अगर आप research कर रहे हैं and you are a student and you're getting a stipend, and you will obviously get your degree and your placement, but while you are learning, you're also getting a stipend. I believe that is a very good incentive from the government. So क्या branches हम देख सकते हैं at NISER? So at NISER Bhubaneswar, you have these branches like biological sciences. You can take up, now this is a dual degree, so you can also think of taking chemical sciences. ऐसे ही आप mathematical sciences का dual degree program ले सकते हैं. Physical sciences भी ले सकते हैं. Specialization in final year based on your academic performance. So this is how you take up branches, the dual degree program. After this, you'll see even at the Mumbai campus, same structure, subjects same as NISER, and the courses are conducted at the Mumbai campus. Now, this was about the NEST exam. तो जब नेक्स्ट एग्ज़ाम मैंने अब आपको बता दिया, आप मानिए कि हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं approximately 14 lakh students are applying every year to our IITs. And आप देखिए seats, Gitika ji, we have approximately 17,000 to 18,000 seats that come under our IITs for BTech. And if we were to check the statistics of how many toppers we had this year, class 10 CBSE, we had approximately 1.95 lakh students this year in grade 10th CBSE board who scored 90% and above. आप मानिए अगर 90% and above लाने वाले approximately 2 लाख बच्चा है, सारा बच्चा साइंस तो वैसे भी नहीं लेने के लिए एबिलिटी रखता. उनको ये नहीं पता कि साइंस में IIT या इंजीनियरिंग के अलावा क्या होता है. और हमें ये ज़रूर बताने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ साइंस इंजीनियरिंग बनने के लिए नहीं करना है. आप और भी बन सकते हैं डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा. इनफैक्ट मैं तो आपके इस पोर्टल के थ्रू ये भी कहना चाहूँगी, दिस प्लेटफॉर्म इज सच अ ग्रेट प्लेस टू कम्युनिकेट टू आवर यंग लर्नर्स दैट कितने कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड करियर्स भी अवेलेबल हैं अब साइंस स्टूडेंट्स के लिए. वन ऑफ माई स्टूडेंट रिसेंटली क्लियर द IP मैट पेपर. दिस इज़ IIM इंदौर जो IP मैट का पेपर लेता है, एंड इट गिव्स यू अ डिग्री इन IP मैट, a management program, 5-year again integrated program, and an average package easily reaches up to 28 lakhs per annum. और ये एक साइंस स्टूडेंट बहुत easily क्रैक कर सकता है क्योंकि that child was preparing for JEE mains and advanced, and here despite taking so much coaching, commerce students are not able to crack that easily. तो मैं ये भी कहूँगी through your platform here today that साइंस के बच्चे कॉमर्स वाले एंट्रेंसेस भी दें, ह्यूमैनिटीज़ के एंट्रेंसेस भी दें. इट्स नॉट दैट engineering is the only field for you or being a doctor is the only field. Let's admit it's not an easy pathway. You can become an engineer, but you might not earn very respectfully. And आपको हमको सभी को पता है that starting salary of engineering, if it's not from a reputed prestigious college, you cannot even tell how much salary you're earning. So to be an earner of repute, you must enter a reputed college. That's my word to my students always. Try to target prestigious colleges. And another in line here only in
while we are having this discussion is Indian Statistical Institute. इसके बारे में लोग जानते ही नहीं. Most of the people not aware that we have a subject called statistics. Statistics. And it is in high demand. Everywhere statistics is being used. Everywhere. Your pension policies, your insurance policies, your risk management, your medical plans that people are selling you, policy bazaar, ये जो policy बना रहा है, इसके पीछे statistics involved है, कोई नहीं बता रहा आपको. The whole permutation combination has to be developed by statisticians. And to be even more particular, I'll talk about not just statistics, a related field called actuarial sciences. Actuarial sciences एक beautiful field है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे उसको पढ़ेंगे या मैंने मैथ्स किया है तो मैं ही उसको कर सकता हूँ. कोई भी उस फील्ड में जा सकता है. And for being an actuarial scientist, you're not a scientist. It's called actuarial sciences because it is studying risk management, pension plans, health insurance plans. It is just working on statistics. And to understand and how to be an actuarial, आपको ACET एग्ज़ाम देना है. Institute of Actuaries of India, Actuarial Society of India का एक एग्ज़ाम होता है called the ACET. जब आप इस पेपर को देते हैं, you are automatically eligible to pursue the actuarial science course. आप अपना BSc भी करते रहेंगे साथ साथ. मैथ्स ऑनर्स ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, जामिया में ले लीजिए, अम्बेडकर में ले लीजिए, IP यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, जहाँ मिलता है ले लीजिए और कहीं नहीं मिलता है तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ही ले लीजिए. BA प्रोग्राम भी यदि ले लेंगे, उसके साथ भी आप एक्चुरियल साइंसेस परस्यू कर सकते हैं. और एक्चुरियल साइंसेस की खास बात यह है दैट यू हैव टू कवर 15 पेपर्स. आपके पास सारा स्टडी मटेरियल घर पे आ जाएगा. You will be sitting at home, preparing at your own level. You want to take coaching, you want to take tuitions to clear the papers. You can take if you don't understand at your end. But आपके पास सब study material घर आ रहा है. पढ़ लीजिए. Papers clear करना आपका काम है. जितने मर्जी attempts आपके पास available हैं. But आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे. So they are avoiding how to sit down and study and giving that much time to academics and creating a future. But believe me, those who are putting that effort are reaping the harvest of their efforts. Very true. So वो बहुत ज़रूरी है. और इसी discussion में we'll continue that Actuarial Society of India provides you the actuarial science course and you can take it up. You will have ample time to cover it up. You can go up and continue doing it till you cover 15 papers, and even if you don't cover 15 papers, whatever graduation degree you are pursuing it with will help you get good placements in companies. And not just the placement, आपने 6, 7, 8, 9, 10 पेपर्स भी क्लियर कर लिए तो आपका जो भी फील्ड में आप, चाहे ह्यूमैनिटीज़ में, चाहे कॉमर्सेस में, चाहे साइंस में, इट विल गिव यू अ बेटर रेज in whatever salary you are drawing on that date. So to improve your prospects, actuarial sciences is a great career if you are not scared of numbers. That is important. आप numbers से deal कर रहे हैं. So however, it's not too much calculation, but it is statistics. Mainly statistics, economics, a little bit of finance. So that is one thing. The other thing I will also share in continuation here is our Indian Statistical Institute, ISI. इसके बारे में जितना कहा जाए कम है क्योंकि ये बहुत reputed institute है. At par with our IITs है. इसकी जो ISI कोलकाता है is the oldest branch. It offers you the program in B-Stats, Bachelor Stats. So there are branches in Bangalore. There are branches in Delhi, Chennai. Yes, we have multiple branches throughout the country as yourself पता ही नहीं told. है बच्चों को. And the very good thing which you have quoted over here or what we have perceived कि हम कहते थे कि अब साइंस ले ली है 11th 12th में तो अब हम इंजीनियर ही बनेंगे. बस. But when you fail, then you realize what you have lost. But now, as it is an old saying, you always have plan B. So even if you fail,
even if you are not able to make in IITs, or if you are not able to go for JEE Advanced or JEE Mains papers, then don't worry about that, because as you said, in many of the institutions your JEE scores will help you. जे स्कोर आपके पास है उसी स्कोर के बेसिस पे आगे आप अप्लाई कर दो, बट अप्लाई टाइम पर करना पड़ेगा, डेट्स निकल जाती हैं इनकी. So what are the dates? कब हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अब JEE? सारा जनरली दिसंबर में, डेट्स आर generally around December, and after your board papers are the papers when these are conducted. So we would like to tell our students that keep working hard. Success is all yours, and even if the plan A fails, you always have plan B, and this plan B is the true representation of what and how you have prepared yourself. We would be discussing more on what are other science entrance examinations with the help of which you can have a successful career, you can live for what you are meant. So dear friends, keep watching us, and yes, keep sharing your feedbacks too. Thank you.